My dear students, how can you attack any problem and be 10 times faster than any other student in India? How can you solve and approach these type of problems? Let us see here. He is asking us to find out what is the power in this circuit. And the power in this circuit is going to be V square by R. V is ready. R you have to find out. So how can you find out the R in this case? So here, if you observe this one, this is a symmetric circuit. If you draw any line in middle, it is going to be symmetry. So in this case, you have to disconnect these two connections here. Okay, when you disconnect, this is going to be 4 and this is going to be 2. 4 and 2 are parallel, means the upper part is 4 into 2 by 4 plus 2 is nothing but 4 by 3. Okay, 4 by 3. And lower part is also same pattern is following. So that is also 4 by 3. Now 4 by 3 and 4 by 3 are parallel. When two resistors are same and they are parallel, its answer will be half of any one. So I am taking half of any one. Your answer is going to be 4 by 6. Okay. So now this is going to be completely 4 by 6, which can be taken as 2 by 3 again. So this 2 by 3 is in series with 2 by 3. So 2 by 3 is in series with 2 by 3 is nothing but 4 by 3 is the net resistance. 4 by 3 is the net resistance. Your formula is V square by R. And you know V is 2. So 2 is 4 and resistance is again 4 by 3. 4 gets cancelled. 3 watts is your answer. That's it. So simple. My dear students, I am trying to train the students in such a way that by seeing my shortcuts, they will develop a mindset where they can see the problem and just do the correct answer without even solving it. How? Let me see here now. So there is a pendulum hanging downwards. A horizontal force is acting on the pendulum, creating an angle of 45 degrees. Okay. And what is acting downwards? mg is acting downwards. When it is making 45 degrees, you should remember one thing, that force acting will be equal to mg. And just blindly you can say your answer is nothing but mass is 10 kg, g is also 10, 100 newtons is going to be your answer without even solving. How? The reason behind that is, when a horizontal force acts on a body, when this is making angle theta, this is also making angle theta, because these two are corresponding angles. mg is acting downwards. fh, here also fh, because by applying parallelogram. And you know tan theta is going to be opposite side fh by adjacent side mg. When theta is equal to 45 degrees, theta is going to be 1. That means horizontal force will become mass of a body, weight of a body, and horizontal forces are going to be same. So just mass into gravity. Mass is 10, gravity is 10. You can do directly without even solving it. Thank you. प्यारे बच्चों, मेरे शॉर्टकट्स आपके माइंडसेट को पूरा चेंज कर देंगे. आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर सॉल्व कर देंगे. वो कैसे, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. अभी एक पेंडुलम हैंगिंग था, उसको हम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करें ताकि ये जो है ना एंगल 45 डिग्रीज बनाएगा, और नीचे की तरफ क्या काम करेगा, वेट ऑफ ए बॉडी विच इज mg. अब ऐसे सिचुएशंस में आंसर क्या होगा? अगर आपने मेरे शॉर्टकट्स देखा हो तो आप डायरेक्ट बोल देंगे fh इज इक्वल टू mg. मास ऑफ ए बॉडी 10 है और g भी 10 है, तो आंसर आपका 100 न्यूटन्स. आप सॉल्व भी नहीं करेंगे. आप चाहे तो आंसर देख लीजिए कितना बड़ा है, आप सॉल्व भी नहीं करेंगे, जस्ट 100 डाल देंगे. वो कैसे, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको. जब कभी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा और mg नीचे की तरफ काम कर रहा और ये एंगल 45 डिग्रीज बना रहा, तो ये भी 45 डिग्रीज बनाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. अब आप करेंगे कि tan 45 डाल देंगे. tan 45 का मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है, सेम साइड्स. सो ऑपोजिट साइड fh हो गया, एडजेसेंट साइड क्या हो गया, mg हो गया. जब tan 45 1 है तो फिर fh और mg दोनों बराबर हुए. तो आप ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्टली डाल देंगे. इस तरह शॉर्टकट्स, यानी कि फास्ट हो जाएगा आपका ब्रेन सॉल्व करने में. थैंक यू. दिस मच लेंथी सॉल्यूशन not necessary. I've got a simple shortcut here. What is that? Work done is equal to force into displacement, and work done is equal to displacement is nothing but velocity into time. And you have to find out the dimensions of time here. That's it. So dimensions of time is nothing but work. Force goes to this side, becomes -1, v power -1. That's it. So simple it is.
अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सोल्यूशन, 20 सेकंड तो लग जाएंगे, मगर हम इसको 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। अभी करना क्या है, टाइम पीरियड, टाइम का डायमेंशन मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ वर्क, वेलोसिटी एंड फोर्स। आसान है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी टाइम होना है ना, टाइम ले लो, वर्क, फोर्स को उस तरफ भेज दो F⁻⁻1, v को उस तरफ भेजो V⁻⁻1। आंसर तैयार है। क्यों खामखा इतना बड़ा सॉल्यूशन। My dear students, how can you solve the problems of previous year questions without even lifting the pen? You can just see this problem. The upper part of the circuit is a Wheatstone bridge, and in a Wheatstone bridge, when all the resistors are same, any one of the resistor is going to be the answer. That means the upper part is completely taken as 4 ohms, and only 16 ohms is left, which is in parallel with 4 ohms now. And you have to find out the resultant by these two. If you observe 16 is 4 times that of 4. That means 4 4 is 16. If it is 4 times that of 4, then you have to add one extra to 4 and divide with 16. Then your answer is going to be 3.2 ohms. That's it. This is a shortcut method to solve the problem. That's it. मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम को रॉकेट स्पीड से ज्यादा सॉल्व करने का मेथड मैं आपको समझाता हूं। अब ये सर्किट के अंदर आप देख लीजिए, अपर पार्ट ऑफ द सर्किट है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, अच्छी तरह से देख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अपर पार्ट ऑफ द सर्किट अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है और इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर सारे के सारे रेसिस्टर्स सेम है, तो कोई एक रेसिस्टर उसका आंसर होगा। इसका मतलब पूरा अपर पार्ट का आंसर क्या हो गया, 4 ohms, और ये 4 ohms 16 से पैरेलल कनेक्शन में है। और नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, अगर कोई रेसिस्टर पैरेलल है और ऊपर वाले से 4 गुना ज्यादा है, दैट मींस 4 4 जा 16, तो नीचे यानी कि ज्यादा वाला रेसिस्टर को अगर इससे 4 गुना ज्यादा है तो इसको 1 से ऐड करके डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर कितना हो गया, योर आंसर इज गोइंग टू बी 3.2 ohms। दैट्स इट। इतना आसान मेथड है।